Hi, good morning, everybody. So, my dear students, today we will discuss our new chapter, chapter number 2 from history on the trail of the earliest people. Okay, so but earliest people are those who came in the early life on the अर्थ कि मतलब एक फॉरेस्ट पे एक सिटी में एक गांव में एक टाउन में जो सबसे पहले लोग वहाँ पे रहने आए थे वी विल डिस्कस एंड रीड अबाउट देम ओके आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द टाइटल इज क्लियर टू यू राइट जो लोग पहले वहाँ पे रहने आए थे बेटा एक जगह पे उनका जीवन कैसा था वो क्या करते थे कैसे रहते थे क्या खाते थे क्या पीते थे वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देम ओके so now let's read so Tushar's train journey as we all know that every chapter begins with a story of a boy or a girl and then the theme is being clear to us in the beginning of the chapter only okay so now let's read about Tushar's train journey. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago? And that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. Like, so beta, he is the boy Tushar and he is going to Chennai from Delhi by train to attend his cousin's wedding. Okay, and now there he managed to get a window seat and from the window as he is watching the nature's beauty he is watching their trees he is watching the sky he is watching the beautiful air that is coming in and out from the window so now suddenly his uncle asked a question and tell him that do you know that the first invention of train in India was developed 150 years ago. 150 years ago means beta in the 20th century. Yes, my dear, in the half or in the middle of the 20th century. Okay, near about 1945 1946. Okay, and it was started during the time period of the Britishers or okay so the Britishers started the development of railways in India just to carry the goods and exchange goods from one place to another place in a huge quantity. They developed this purpose just to save time money and their energy level okay so of this purpose they developed the railways in India okay so now he thought that when people don't have the transport system, they don't have railways, they don't have the roadway system, how the people travel from one place to another place? अब ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आना तो बेटा जरूरी था क्योंकि आज के टाइम पे तो हमारे पास वी हैव रेलवेज वी हैव रोडवेज वी हैव पब्लिक ट्रांसपोर्ट वी हैव एयरवेज वी हैव water waves but at that period of time do you think that when life started on this planet earth and people used to live in forest in villages does they have any kind of facility with them no I don't think so that they have railways they have water waves they have roadways but they have invented after a long period of time so let's discuss what were the earliest people do. I hope the theme of this chapter is clear to you like we will read about the lifestyle of the earliest people okay so now let's start. The earliest people why were they on the move पहले के लोग बेटा यात्रा करने में ही क्यों विश्वास करते थे वो हमेशा चलते ही क्यों रहते थे वो हमेशा यात्रा ही क्यों करते थे. वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन दिस सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो लाइक 200 साल पहले या 2000 साल पहले यहाँ पे कैसे लोग रहते थे ओके टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर्स और आज हम उन लोगों को किस नाम से बुलाते हैं वी कॉल देम बाय द हंटर गैदर्स दे
द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। अब उनका ये नाम इसलिए पड़ा बेटा क्योंकि वो इसी प्रकार से अपना खाना इकट्ठा करते थे। दे कलेक्ट देयर फूड एंड एट देयर फूड बाय दिस मीन्स ओनली। हंटर्स मीन हंटिंग, द पीपल हु डू हंटिंग मतलब कि जो फॉरेस्ट में जाके शिकार करते थे बेटा। एंड दे हंट एनिमल्स, और वो जानवरों का, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। और गैदर्स, और फॉरेस्ट से या फिर आसपास के कई इलाके से कुछ भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस या कुछ भी और अच्छे खाने की चीजें वो लेके आते थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया हंटर गैदर्स। ओके, जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, आई टोल्ड यू, वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कोट फिश एंड बर्ड्स, वो वहाँ की आसपास की नदियों से ये पकड़ते थे, फिश पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे। गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स एंड सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, और फिर जंगलों से फल, जड़ें, नट्स, बीज, पत्तियां, स्टॉक्स एंड अंडे लेके आते थे। सो दैट्स वाई दे वर बीइंग कॉल्ड एज द हंटर गैदर्स। ओके, द इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट इन अ ट्रॉपिकल लैंड लाइक आवर्स meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. Okay, means of obtaining फूड मतलब ये उनका क्या जरिया था बेटा, ये उनका खाना अरेंज करने का एक साधन था, ये एक जरिया था। ओके, नाउ none of these things was easy to do. There were several animals that run faster than us, many that are stronger. To hunt animals or catch fish and birds, people need to be alert, quick, and have lots of presence of mind. Now beta, we all know that na, like if we do hunting, then in a forest there are several of animals that run very faster, like leopard, like cheetah, like tiger, like rats, like rabbits, and all other creatures who run very fast. And there are some of the animals who are really big in weight, like elephants, like zebra, like wild buffaloes, wild cows, so that they were really high in weight. Okay, so now my dear students, and they were hunted विद आ रियली गुड पेशेंस ऑफ माइंड, की मतलब वो शांति पूर्वक बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी जल्दबाजी में शिकार नहीं करते थे। वो बिल्कुल शांति पूर्वक और आराम से विद कंसंट्रेशन दे डू देयर हंटिंग। ओके, एंड वी नो दैट टू हंट द टू कैच द फिश एंड बर्ड्स पीपल नीड टू बी अलर्ट, और फिश और बर्ड को पकड़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। और वो बिल्कुल चुपचाप एक जगह पे बैठ के बस इंतज़ार करते थे कि कब उनका शिकार उनके हाथ में फंसेगा। ओके, एंड टू कलेक्ट द प्लांट प्रोड्यूस यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ plants are edible, that is can be eaten. Okay, like can you tell me now beta what can be done so that the people can really eatable? अब जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा वो तो इजीली मिल जाते हैं, आराम से उनकी पत्तियां तोड़ लो, उनके फ्रूट्स तोड़ लो, उनकी जड़ें खा लो। ओके, एंड दैट इज इडेबल, और जो खाने लायक हो। दैट इज कैन बी ईटन एज मैनी एज कैन बी पॉइजनस, और उस समय पे बेटा वहाँ के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, उन्हें ज्ञान भी नहीं था, उन्हें नॉलेज भी नहीं थी। दे डोंट हैव एनी नॉलेज और एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लांट्स लीव्स, अबाउट द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स दैट इट इज़ ईटेबल और इट इज़ पॉइजनस इन नेचर। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड अबाउट द सीजन्स व्हेन द फ्रूट्स रेपन, एंड उनको ये जानना भी ज़रूरी था कि कौन से सीजन पे कौन सी जो फ्रूट है वो पक जाता है। लाइक इन समर वी हैव मैंगो रिपन, we have jamun and all other fruits that they have their own season to ripe. Okay, now list the skills and knowledge that the children of these communities had. Do you have these skills and knowledge? क्या आपके पास वो सारी स्किल्स एंड नॉलेज हैं जो उन समय के बच्चों के पास होती थी? लाइक हंटिंग, like forest produce, like catching birds and fishes, and do hunting in forest. Do you have any kind of skills in you? Okay, we will discuss it in our class. There are at least 4 reasons why hunter gatherers moved from place to
place. Now we will discuss the reasons that why the hunter gatherers move from one place to the another place. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. नाउ अगर बेटा वो एक जगह पे रहते तो वहाँ पे जहाँ पे वो रहते वहाँ की सभी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को वो एक ही समय पे खा जाते. मीन्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे कैन क्लियर अप ऑल द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉर फ्यूचर देयर नथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड. Okay, now so in search of food they move from one place to another place. like कि भाई इस जगह पे जहाँ पे वो पहले रह रहे थे वहाँ पे कुछ आगे के लिए छोड़ के, आगे के लिए पकने के लिए छोड़ के वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते थे इन सर्च ऑफ फूड. सेकेंड, the animals move from place to place either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. Like the animals who move from one place to another, from one land to another in search of small prey. Here beta prey means, do you know the meaning of prey? Prey means khana. Okay, prey means shikar. Okay, like they follow the small creatures and they follow the lands where the grazing is available, where the grass is available and other products are available. So those who do hunting had to follow the movements of these animals. Okay, वो इन्हें भी उन सब की movements मिलती थी. Okay, now that is why those who hunted them had to follow their movements. Okay, third, the plants and trees bear fruit in different seasons. As we all know that plants and trees हर सीजन में अपने फ्लो को पकाते हैं और हर एक सीजन में एक प्लांट और एक ट्री के ऊपर एक प्रॉपर फ्रूट लगता है. लाइक वी हैव मैंगो ट्री एंड वी हैव जामुन ट्री इन समर सीजन एंड एप्पल और पोमीग्रेनेट, ऑरेंज. ओके, सो सच काइंड ऑफ fruits have their own particular season to ripe. Okay, my dear. So people may have moved from seasons to season in search of different kinds of plants and trees. Fourth, people and plants and animals need water to survive. Okay, water is found in the lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the years, others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons, winter and summer. Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they traveled on foot. Okay, so now beta, in search of water they also move from one place to another. Like the people who follow the river or who are living near the place of water, they can sustain for a proper time. But those who are living in forest, who are living in fertile lands, they need water for their survival and they move from one place to another place in search of water. Only I hope the concept is clear to you till here, and in the further video we will discuss our chapter. Now this is your question and you will note it down. Question is, why the hunter gatherers move from one place to another place, and here are your 4 points. You will note it down. Thank you.